षोडश अर्थ कमिशन फेब्रुआरी मास 4 तारीख रु 7 तारीख पर्यंत ओडिशा राज्य गस्तरे आसिछंती। विशेष करिकी ओडिशा राज्यर अर्थनैतिक स्थिति सहित आमर ग्रोथ एवं ता सहित डेवलपमेंट काम को अनुध्यान करने सहित आगामी दिन में ओडिशा किभली भाव में जो क्षेत्र में आमर कम अच्छी ता उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करा जाई आगामी दिन में ओडिशा को एक समृद्ध ओडिशा आड़ को नबार ये चिंता मध्य से रखा जाइछि। विशेष करिकी कमिशन 4 तारीख आसला परे सर्वप्रथमे ओडिशा रे प्रतिष्ठित थिबा आमर ओडिशा जनजाति संग्रहालय एवं कलिंग स्टाडियम परिदर्शन करिबा एवं परवर्ती पर्याय 5 तारीख रे पूरी परिदर्शन सहित कोणार्क यह निश्चित भाव में मु तांकरे परिदर्शन आज बैठक रे एवं समान को बहुत सुखी कराई पारिछि। ये अनुभव आज तांकर बैठक रु अनुभव हैला। विशेष करिकी आज आमे कमिशन का सहित जो आमर आलोचना हैला ये बैठक रे राज्यर विभिन्न आर्थिक दिग प्रति और यार गठनमूलक उपरे विशेष भाव में गुरुत्व आरोप करा जाइछि। सेथिरे विकासमूलक आवश्यकता को एवं से अनुसार तार आर्थिक क्षमता एवं प्रस्तावित आर्थिक हस्तांतर व्यवस्था संपर्क में कमिशन का सहित डिटेल आलोचना होइछि एवं कमिशन का सम्मुख में मध्य आमे किछि ओडिशार विकास को त्वरान्वित करबा पई आमे किछि प्रस्ताव तांको पाखरे आमे रखिछु एवं आमर आशा अछि जे आगामी 2026-2031 जो ये पंचवार्षिक योजना माध्यम रे यह प्रतिफलित हबो एवं निश्चित भाव में ताकू आधार करी आमर कमिशन उपरे जो आमे दाबी रखिछु ता उपरे किछि प्रमुख बिंदु भी आमे रखिछु सा उपरे मध्य मु जस्ट किछि आप पाखरे मु कहया पई चाहे। विशेष करिकी केंद्र सरकारंकर जो टिकस अछि बा टिकसर जो आय हुए सेथिरु साधारणतः भावे राज्य मान को जो बंटन करा जाउछि 41% 41% रु किभली भाव में यह 50% को वृद्धि पाइब आ सेथिपाई आज आमे कमिशन पाखरे आमर दाबी एथिरे उपस्थापना आमे उभय लिखित आकार रे एवं एठी आलोचना कला बेले मध्य मु मोर वक्तव्य कथा को मु रखिछि एवं विशेष करिकी केंद्र सरकार टिकेस आयर जो अंश राज्य मान को बंटन करा जाय थाए राज्य मान मध्य एक निर्धारित सूत्र आधार रे बंटा जाए जो ओडिशार भाग 4.528% ओडिशा पाई थाए। यही ओडिशार भाग को तार वृद्धि करबा पई आमे 4.964% को बढ़ाइबा पई आमे दाबी रखिछु। यह करले निश्चित भाव में आमे अधिक आर्थिक सहायता ओडिशा पाई परिबो एवं षोडश अर्थ कमिशन 2026 रु 31 अवधि पाई केंद्र द्वारा आकलन करा जाइथुआ मोट राजस्व प्राप्ति
GRR ର 2% समस्त ग्रामीण और सहरांचल स्थानीय निकाय संस्था पाई मिलित अनुदान स्थिर करिया पाई मध्य आमे प्रस्ताव देइछु। ये अर्थ आमको प्राप्त होले निश्चित भाव में विशेष करी पंचायत राज एवं जो आमर लोकल अर्बान बॉडीज अच्छी सहरांचल एथिरे आमे गोटाए स्वतंत्र भाव में अधिक अनुदान पाई पारिबु जहाँकि लक्षाधिक टंका अच्छी निश्चित भाव में बहुत बड़ गोटे विकास क्षेत्र में यह उपादेयता मिल पारिबो एवं राज्य विपर्यय परिचालना पांठी SDRF पाई दिया जाउथवा वार्षिक अनुदान रो 75% केंद्र देइथाय एवं बाकी 25% राज्य सरकार करिथाय। जेहेतु ओडिशा गोटे प्राकृतिक विपर्यय प्रबण अंचल होइतबा कारणरू प्राय प्रति वर्ष एथिरे साइक्लोन फ्लड एवं विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय आसुथवा कारणरू एथिरे केंद्र सरकार निकटरे आमे दाबी रखीचु 100% केंद्र सरकार आमको ये अनुदान जोगे देबा पाई। एहा सहित बेसिकली स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक रुधिमंत करिया पाई जल जोगाण और परिमल एवं ता सहित बार्धक्य सुरक्षा एभली एक किसी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को आमे रखीचु एवं कमिशन को मध्य प्रस्ताव देइचु से यारी उपरे हमको अधिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक सहायता जोगे देबा पाई विशेष करी समारी ऑफ डिमांड्स जोटा राज्य सरकार जो आमर दाबी अच्छी एथिरे हस्तांतर पूर्वर राजस्व नियंट प्री डेवलुएशन रेवेन्यू डेफिसिट जहाँकि आमर 9,88,422 कोटी 22 लक्ष कोटी अर्थात 9,88,422 कोटी एवं राज्यर निर्दिष्ट आवश्यकता स्टेट स्पेसिफिक नीड आमर 1,10,434 कोटी स्थानीय निकाय संस्था गुड़ी को जोटा ग्रामांचल एवं सहरांचल अनुदान ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज रूरल एंड अर्बान इथिरे 1,36,000 कोटी टंका एवं राज्य विपर्यय प्रमोशन पांठी SDRF जहाँ 31,004 कोटी टंका एवं राज्य विपर्यय परिचालना पांठी SDMF जोटा कि 29,252 कोटी टोटाल ये समस्त को मिसेले 12,59,148 कोटी टंकार आमे दाबी आसंता 2026 रु 31 मसीहा पर्यंत ये 5 वर्ष रे आमर दाबी को एथिरे आमे कमिशन पाखरे रखीचु जोटा कि हमको आगाम दिन रे आशा रखीचु जे आमर आमे अन्य आर्थिक पंचवार्षिक अपेक्षा एथर हमको अधिक अर्थ आर्थिक सहायता आम पाखक आसीबो एवं आमर जो बड़ लक्ष्य रही से विशेष करिकी ओडिशा रे जो संभावना राज्य हिसाब रे आज माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य कथा रखिछंती एवं विकसित भारत गठन रे ओडिशा को ग्रोथ इंजिन हबो ये कथा को तांकर प्रस्ताव रे से कथा रखिथिबा कारणरू आमे विशेष करिकी फोकस करूछु कमिशन को पाखरे रखीचु अर्बानाइजेशन उपरे जोटा कि शहरीकरण एवं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विशेष करिकी कृषि एवं ग्राम और उन्नयन उपरे आमे ताको फोकस करूछु एवं MSME सेक्टर को फोकस करूछु पोर्ट लेड डेवलपमेंट हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड स्किलिंग फॉर द वर्ल्ड यार ऊपर आमे फोकस रखीचु जहाँ फरे आमर आज दिन रे जो आमर इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट रे आज आमर चली निश्चित भाव में आमे बहुत भल स्थित रे अच्छु आमर फिस्काल हेल्थ
आज जो स्थिति रे अच्छी आमे खुशी व्यक्त अच्छु ये आज आम भारत वर्ष रे नंबर 1 अच्छु आउ यही रेट्रे एवं ताठार अधिक रेट्रे वृद्धि करी आम आग को जीवाई चाहूँ आउ से आम ओडिशार जनसाधारण जो आशा आकांक्षा अच्छी एवं लोकंकर जो स्वप्न अच्छी सरकार जो लक्ष्य अच्छी ताकू निश्चित भाव 4,70,00,000 लोकंकु आधार करिकी जो समृद्ध ओडिशा गठन करवा एवं ता सहित विकसित ओडिशा गठन करिकी नुआ ओडिशा हिसाब से आमे ताकू जो नेबापी चाहूँ निश्चित भाव आमे आगामी दिन में एक अर्थनैतिक शक्तिशाली भारत वर्षर श्रेष्ठ 5टी राज्य भितर स्थानित होगापाई आमर जो लक्ष्य रही से लक्ष्य पथरे आम आगे निश्चित भाव में जावाई जो लक्ष्य रखीचु से ये 16th फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया तांको पाखरे आमर जो आमर आर्थिक सहायता ओडिशा को स्वतंत्र भाव में फोकस करिकी ओडिशा को सहायता देवाई जो आम प्रस्ताव रखीचु अनुरोध रखीचु मु आशा करी निश्चित भाव में एथर आम अधिक सहायता पाइपरबू एवं ओडिशा को एक समृद्ध ओडिशा गठन करने आम से प्रकार आज आलोचन सकारात्मक आलोचन ये सफलता मिलियो बोली मु दृढ़ आशा रखी। धन्यवाद। आपण शुणुले मुख्यमंत्री मोहन माझींकर प्रतिक्रिया किभली भाव में ओडिशा दाबी रखी 12,056 कोटी 56 लाख कोटी टंकार अर्थ मंत्रालय आगे दाबी रखा जाइछि एवं जो भाव में 2036 सुधा ओडिशा विकास रोडमैप प्रस्तुत करुछि सेथिपाई जो अर्थर आवश्यकता रही से अर्थ को केन्द्ररू मिलवा पाई दाबी उपस्थापन करिछि ओडिशा रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में हो किंबा अन्यान्य क्षेत्र में हो किभली ओडिशार विकासर गति आग को जाई पारिबो से नहीं मध्य दाबी उपस्थापन करा जाइछि। वर्तमान समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस रे ओडिशा रही एवं डबल इंजिन सरकार मध्य ओडिशा रही पूर्वोदय ओडिशा को प्राधान्य दिया जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी पक्षरु विकास ग्रोथ इंजिन रे ओडिशार गुरुत्वपूर्ण भागीदारी रहिबो बोली कहा जाउछि। तेणुकरी 2036 सुधा ओडिशार विकास हेले ही भारतर विकासर ग्रोथ इंजिन स्टार्ट हेबो बोली गोटे प्रकार कहा जाउछि। वर्तमान समय 12,56,000 कोटी टंकार दाबी उपस्थापन करा जाइछि। आपण शुणुले मुख्यमंत्री मोहन माझींकर प्रतिक्रिया किभली भाव में ओडिशा 2036 सुधा विकसित होई पारिबो से नहीं पूरापूरी भाव में रोडमैप प्रस्तुत करा जाउछि। रूरल डेवलपमेंट कथा कहतु किंबा अन्यान्य क्षेत्र में किभली भाव में अर्थर आवश्यकता रही से अर्थ अनुदान मिलिबा पाई दाबी उपस्थापन करा जाइछि। While taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. Sir, one second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware of this. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance
with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the request that came from both sides, and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में याकू घरे लगाओ तो विवाह कथा तो जन मेकअप, गेटअप, प्रेजेंटेशन, एक्शन, रिएक्शन, सेलिब्रेशन, रूपेली परतारू रंगमंच, केवल मनोरंजन ही आमर टार्गेट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। रविवार सकाल 9:30 और राति 9:30 रे। मु पहुंचे दुर्गम अपंतरा ओडिशा रे। सुने आपणଙ୍କ मुहरु विकास को नहीं सतमिछर अंगे निभा कथा। मोर लुह और क्रोध को चापी रखे। देशर अमृत काल रे विष और विषादर कहानी। वास्तवतार निछक सत को नहीं मो आसुछि जन ऑडिट रे रविवार संध्या 7:30 रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। जय जगन्नाथ। चकाखी सबू देखु आमे लड़ू साधारण ओडिया न्यायर लड़ी। किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहबू रोक। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी कटक, भुवनेश्वर। प्रथम आपको दृश्य देखा चाहिए। क्राइम, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, जीवन जीविका और संघर्षर आखि देखा कहानी। ट्विन सिटी बड़ खबर प्रतिदिन संध्या 5:30 केवल अर्गस न्यूज रे।
ब्रेक पर आपको स्वागत। आसंता 21 तारीख रु मैट्रिक परीक्षा, फेब्रुआरी 21 रु मार्च 6 तारीख पर्यंत चलिब परीक्षा। चलित थर मोट 5,22,336 परीक्षार्थी परीक्षा देउछंती। 3,133 परीक्षा केन्द्र करा जायछि। 314टी नोडाल सेंटर करा जायछि। 21टी नोडाल सेंटर पुलिस स्टेशन होइछि। कंधमाल रे 7टी, कोरापुट रे 4टी, मालकानगिरी रे 10टी होइछि। 12 तारीख रु परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र जीव। 19 तारीख सुधा समस्त परीक्षा केन्द्र प्रश्नपत्र पहुंचब। नोडाल सेंटर परीक्षा केन्द्र को 7:30 रु 8:30 मध्य पहुंचब प्रश्नपत्र। 9 रु 11:30 पर्यंत परीक्षा चलिब। प्रश्नपत्र भाइराल रोकिबा पई प्रश्नपत्र रे सीरियल नंबर रही। जदि प्रश्नपत्र भाइराल हुए तेबे जना पड़िजिब केउठु भाइराल होइछि प्रश्नपत्र। कॉपी रोकिबा पई नोडाल सेंटर रे लाइव स्ट्रीमिंग करा जिवो। ता सह 600 सीसीटीवी परीक्षा केन्द्र रे लगा जिवो। कॉपी रोकिबा पई 4 स्तरीय स्क्वाड व्यवस्था ग्रहण करा जिवो। मार्च 19 रु आरंभ हेबो खाता देखा। आमर पूर्व निर्धारित घोषणा अनुଯାयी यही मास 21 तारीख रु आरंभ हेबो एवं यह मार्च मास 6 तारीख पर्यंत कंटिन्यू करिवो। जे आमे 3,133 टी केन्द्र करिचु आमर 30 टी जिल्ला रे एवं आमर प्रश्नपत्र जायकी सुरक्षित रहिया पई 314 टी नोडाल सेंटर आमे जाऊ कहू नोडाल सेंटर हेची। प्रति जिल्ला रे गोटे गोटे नोडाल सेंटर एवं आवश्यकता देखी आउ केतोटी सेंटर विभिन्न आमर सब डिविजनल हेडक्वार्टर ब्लॉक हेडक्वार्टर रे एमती 314 टी नोडाल सेंटर हेची। आमर प्रश्नपत्र 12 तारीख रु आसंता 12 तारीख रु जीवो एवं 19 तारीख भितर माने आमर सब प्रश्नपत्र रही जिवार व्यवस्था अछि। शांतनु महापात्रंकर कपिल प्रसाद एसबीआई बैंक रे थिबा लकर खोला जाइछि। विजिलेंस उपस्थिति रे खोला जाइछि लकर। एथिरु 2 लाख टंका हरिदासपुर अंचलर एक प्लॉट रो कागज पत्र मिलिछि। मालकानगिरी जलछाया उपनिर्देशक शांतनु महापात्रंक लांच कारबार रो पेड़ी धीरे धीरे खोलुछि। जनसेवा केन्द्र कर्मचारी को ढाल करी ऑनलाइन जरिया नेउथिले लांच। कॉन्ट्रैक्टर एवं अन्य लोकों ठारू 2019 रु 2024 मध्य 1 कोटी टंका लांच आनिथिबा तथ्य पाइछि विजिलेंस। गंजाम जगन्नाथ प्रसाद जनसेवा केन्द्र कर्मचारी अलेख चंद्र प्रधान को पचरा उचरा करुछि विजिलेंस। से भली लेबर को टंका पेमेंट दर्शाई सरकारी टंका को एकाधिक अकाउंट को आनी आत्मसात करिसेंती शांतनु महापात्र। तांको एथिरे सहयोग करुथिले डीओ विश्वजित मंडल एवं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अम्यकांत साहू। उभयंक घरु मिलिछि शताधिक बैंकर पासबुक। विभाग विभिन्न कार्य करी टंका लुट पाई एही अकाउंट सबको व्यवहार करा जाउ थाई पारे बोली संदेह करुछि विजिलेंस। समस्त अकाउंट किछि श्रमिक मानकर बोली विजिलेंस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। 2 कर्मचारी पाखरे एते अकाउंट केउठारु आसिला ताकू नहीं स्वतंत्र तदंत आरंभ करिछि विजिलेंस विभाग। सनातनी फिल्म विरोध में चर्च षड्यंत्र बड़ प्रमाण अर्गस हाथ में लगिला तार एक्सक्लूसिव वीडियो। आंध्र प्रदेश चर्च पास्टर और ओडिशा ख्रिस्टियान नेतांक मध्य जूम मीटिंग। सनातनी फिल्म को जोरदार विरोध पर प्रस्तुत होता रणनीति। बहु संख्यार अभियोग और हाईकोर्ट रे पीआईएल नहीं होता योजना। पास्टर जेम्स प्रस्तुत करथिले मास्टर प्लान। सारा ओडिशा रे बड़ प्रतिवाद पर आह्वान दिया जाउथिला। सरकार पाखरे बहु संख्यार अभियोग दाखल पाई रणनीति प्रस्तुत होता। यूट्यूब को लेखि ट्रेलर बंद करने योजना करा जाउथिला। आंध्र ख्रिस्टियान सोसाइटी करिब आर्थिक सहायता।
आईनगत लड़ई भी सहयोग करिब ख्रिस्टियान सोसाइटी 15 रु 20 जिले में ख्रिस्टियान मानकु अभियोग पई योजना करिथिला। राज्यपाल डीजीपी और संख्यालघु मंत्री को चिठी लिखा भी योजना चलीथिला। ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार थिबारु भय रणनीति प्रस्तुत रे सामिल पारलाखेमुंडीर मनोज बड़नायक 2024 रे आम आदमी पार्टी रु विधानसभा निर्वाचन मध्य लड़ीथिले। स्वर्ग को जीवा चाहूच हेले जीशु कृष्ण शरणापन्न हुआ। जीशु कहते मानव सेवा कर, मानव सेवा ही माधव सेवा। जाति रे आमे हिंदू। हाँ नमस्ते जी। जी नमस्कार। मनोज भाई उधर सनातन कर्म सिनेमा ट्रेलर आया ना? हाँ इसके लिए मैं लेटर देना चाहता हूँ। वो तो बंद करेगा वही बात है। बंद हो जाएगा? लेटर भेजना पड़ेगा। ओके। 2-4 ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा का चीफ कलेक्टर लेटर भेजा है। मैंने वो अच्छी बात है, ज्यादा भेजना पड़ेगा। यस, ज्यादा भेजना पड़ेगा। एक मिनिस्टर एमएलए को बुलाया था, उसका पार्टी के मैंने डेट डिक्लेयर करने के लिए। वो लोग जाकर ये अच्छा फिल्म है, रिलीज होना चाहिए इसे बोल के 7 तारीख वो डेट डिक्लेयर किया है मीडिया में। दे आर गेटिंग रेडी टू रिलीज ऑन 7th February। I see। जी। So what we are planning is from Odisha non-people Christians reporting from complaints to the government, multiple complaints. जी। Then we'll go for PIL. Yes। The citizens need not to pay any rupee or they cannot. मैं लिखिथिलु जे जो इंडियन सेंसर बोर्ड जो अच्छी ताकू आमे गोटे दरखास्त देइथिलु जे फिल्म रिलीज हवा पूर्वरु तार कंटेंट्सटा आउ थरे आपण वेरीफाई करंतु बा एग्जामिन करंतु। एग्जामिन कला परे जदि फील करिवे जे एटा ठीक अच्छी कंटेंट्स किसी असुविधा नहीं ताहले सेटा करंतु। आमर एतिकी थिला प्रेयर कहीं ना एटा आमर सिनेमाटोग्राफी एक्ट रे प्रोविजन अच्छी जे कोनोसी सिनेमा रिलीज हवा पूर्वरु ता कंटेंट्सटा को देखंती जदि ताहा कोनोसी आमर सार्वभौमत्व बा आमर शांत परिवेश बा आमर सिक्यूरिटी को जदि थ्रेट करू थाए ताहले सेटा दिया जीव नाही, सर्टिफिकेशनटा दिया जीव नाही। आमर प्रेयर थिला सेतिकी। कोर्ट याकू आमकू ग्रहण कले जे यूनियन गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट को कहिले जे तमे एटाकू आ उपरे इंस्ट्रक्शन आण एवं एटाकू परवर्ती समय सुनानी पई रखिचंती 19 तारीख को। आउ मध्य मोर कहिवार थिला जे जदि स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट कहउचंती जे कोनोसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हबो नाही ताले से माने ए विषय रे उपयुक्त पदक्षेप नियंतु। समय को छोट ब्रेक पर खूब शीघ्र फेरुछु। आमर प्रतिटी सकाळर आरंभ किछि चिन्हा चिन्हा व्यक्तित्व सहित स्वागत जहां संघर्ष पुणी सफलतार कथा सबू आपण को करिब प्रभावित आपण कहिबे यही तो प्रेरणा इंजीनियरिंग आमर प्रतिटी अतिथि आपण सकाळर प्रथम अतिथि अतिथि देव भव आम संस्कृति आम विचारधारा। आज अतिथि सोमवार गुरुवार सकाळ 8:30। राज्य आमर, भोट आमर, सरकार आमर, आम विकास भी हेबो आम कथारे। चोरी चपाटी पिसीर आमे करिबु विरोध। आपण करिबे निष्पत्ति महापंचायत रविवार राति 8टारे।
छोट बड़ अनेक समस्या को नहीं जीवन जदि समाधान चाहूचंती आम सहित लाइव कथा हुआ मुनि ऋषि साधना और सिद्धिर आधार आमे बताइबू समस्या समाधान सरल महाउपाय समस्या समाधान सरल सूत्र डॉक्टर मनोज लेंकांक सह प्रति शनिवार सकाळ 7:30 हेयर फॉल फैटी लिवर डायबिटीज कैंसर परी मारात्मक रोगर प्रतिरोधक शक्ति पुणी समाधान सूत्र आम शरीर में रही स्टेम सेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवाशीष गिरी परामर्श को नहीं आमर विशेष कार्यक्रम आम शरीर आम डाक्टर प्रति शनिवार सकाळ 8:30 एवं राति 10:30 रे। राजनीतिर पोषापली खेल अपराधर कला साम्राज्य खेलकूद बेउसा कारबार सब उपरे रही आमर कड़ा नजर कथा कहूचे पश्चिम ओडिशा माटीपब जंगल डंगर संगे जुड़ी है आमर जीवन अलगा आमर खाइन पीएन पिंधन उड़ान आमर कला संस्कृति रखीचे बांधी समतल देखुन आमर संगे फी दिन बेलगुड़ा 4 बजे बड़खा खबर ब्रेक पर आपको पुणी थे स्वागत पुणी जननी जंत्रणा नाल साजिला बाधक गाँ को पहुंची पारिलानी आंबुलांस 1 किलोमीटर खटिया बुहाले प्रस्तुति एभली अभावन घटना बौद्ध जिला बाणीभूषणपुर पंचायत डिगिसिरा ग्रामर रवींद्र जेना पत्नी देखा मिली रंजिता जानी प्रसव जंत्रणा हेबारु परिवार लोके आंबुलांस को खबर देथिले हेले आंबुलांस आसीथिले सुधा गाँ को जीवापाई बाट अटकाई लक्ष्मी नाल परे आंबुलांस कर्मचारी माने गाँ को नाल डेई चली चली जाइथिले परे ग्रामवासी और आंबुलांस कर्मचारी माने मिसी प्रसूति महिला को खटिया बोही 1 किलोमीटर पर्यंत आनिथिले एबे प्रसूति को गुरुतर अवस्था रे पुराणाकटक चिकित्सा केन्द्र में भर्ती करा जाइछि। इंग्लैंडर बाथ सहर में थिबा श्री जगन्नाथ मंदिर रे सरस्वती पूजा पालित हो जाइछि। पवित्र श्री पंचमी उपलक्षे बागदेवी मां सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी उत्सव आनंद उल्लास रे अनुष्ठित हो जाइछि। सकाळु सकाळु मंदिर रे स्थानीय भक्त माने मां सरस्वती को पूजा करथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन चतुर्धा विग्रह को नूतन वस्त्र परिधान करने सहित स्वतंत्र पूजा अनुष्ठित होता। ए उत्सव में 400 ऊर्ध्व श्रद्धालु जोगदेवा सहित प्रसाद सेवन करथिले। मंदिर परिसर में समूह आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन मध्य करा जायथिला। कार्यक्रम को श्री जगन्नाथ मंदिर सिटी ऑफ बाथर ट्रस्टी तथा सेवक सुस्मिता राजहंस परिचालना करथिले। समय शेष होइछि। अर्गस अपडेट को एठी रखिबा मते विदा दियंतु। नमस्कार। राजनीतिर पोषापली खेल अपराधर कला साम्राज्य खेलकूद बेउसा कारबार सब उपरे रही आमर कड़ा नजर कथा कहूचे पश्चिम ओडिशा माटीपब जंगल डंगर संगे जुड़ी है आमर जीवन अलगा आमर खाइन पीएन पिंधन उड़ान आमर कला संस्कृति रखीचे बांधी
संपर्क देखुन आम संगे फी दिन बेलगुड़ा 4 बजे बड़खा खबर। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। राजनीति खेल ये राजनीति खेल राजनीति खेल ये राजनीति खेल काहाकु करे माला माल काहाकु करे माला माल कहा पाई टाण राजनीति खेल ये राजनीति खेल भाईना ये नेता प्रबल जनता दुर्बल खाली तो दल बदल कहा पकेटारे रोकड़ा का अवस्था बारंडा दिकोड़ा कुकुड़ा ना कुकुड़ा बुआठी कोन चली सिटी किछि नाही म ये पॉलिटिकल आखड़ा रविवार राति 10:30 और शुक्रवार राति 10:30 रे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। मेकअप गेटअप प्रेजेंटेशन एक्शन रिएक्शन सेलिब्रेशन रूपेली परतारू रंगमंच केवल मनोरंजन ही आमर टार्गेट एंटरटेनमेंट 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 रविवार सकाल 9:30 और राति 9:30 रे। The authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very I would say such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this. Then the question, sir, I think one member raised saying, you know, the numbers went up after 2016. Sir, I was very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very similar comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is 860. I am shocked. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir. I'll be careful next time. Take your seat. Sir, Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually close to 1,000. The numbers I have given, sir, as can be seen in the statement, are from the Bureau of Immigration. In many cases, possibly because if they were not issued emergency certificates, they may have been
treated differently. Maybe they went to some other country. So I would say we should look at this in a overall manner rather than try to make clever points about which year was a little higher than which year. Then, sir, the issue came about military aircraft being sent. Now, some other members also raised, have military aircraft been sent before? The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever. There are certain taxes that go directly to the state governments. So, for example, state GST, SGST, that goes directly to the state government. Then any taxes on liquor are levied and collected by the state. Similarly, any taxes on petrol, value-added tax on petrol, for example, is levied and collected by the state. So that some of these taxes go directly to the state. Similarly, there are few taxes that go directly to the central government. Anything that's related to any tax revenues that are related to the union territories, they go straight to the central government. Any cesses and surcharges that the central government levies, they also go directly, all of it, to the central government. The rest of the union taxes, union tax revenues, including income tax, corporation tax, custom duties, etc., states' share of the GST, the center's share of the GST called CGST, center share in IGST. This commission recommends how it should be divided between the center and the states, and then how should the state share be divided among the states. So, on vertical devolution, 15th Finance Commission, which preceded this commission, had recommended that 41% should go to the states and remaining 59% should go to the central government. And that becomes the part of the central government's revenues, and states' share then is further divided through this horizontal devolution among the 28 states. Okay, and that is now the commission also makes some other grants. There are grants to the third tier of the government system, meaning the Panchayati Raj institutions and municipal institutions in urban areas. So that's one set of grants. Second set of grants are given on for disaster relief, and that is related to the SDRF, the state disaster relief fund, and then occasionally the commission can also award grants which are called either the state specific grants or sector specific grants. State specific will go to specific state to which the grant has been recommended, and sector specific relates to sectors like health, education, etc. That is the full extent. All the grants are given. They come out of the central government's budget. Okay, so that is very important to understand that whereas the devolution is out of a common pool of tax revenues, and therefore, once decided that, let's say under 15th Finance Commission, 41% must go to the states, then that is states' revenue. It's a state's right of the states. Grants are coming from the central government's budget. So there is a difference in that, and sometimes it has happened that the central government, whereas, on the devolution, always the recommendations of this commission have been accepted and implemented. Occasionally, when it comes to grants, because they are coming from the central government's budget, there have been occasions when the central government did not release those grants, as in the case of some of the grants that the 15th Finance Commission had recommended.
So that is the rough mandate of the Finance Commission. Now, as a part of preparatory work, the Commission meets, carries out very wide-ranging consultation. It consults a large number of the ministries of the central government. It consults every single state, and our visit right now to Odisha is a part of that state government consultation. But going beyond that, we also have consulted at least 4 previous finance commissions, meaning the chairman and any available members of those finance commissions. We have also consulted the experts in every single state. So we went to 4 or 5 different cities and then invited the states in the vicinity of that city. So that way we got experts from all the states who came and gave their views on how the Commission should carry out its mandate. We also try to consult the eminent persons. In general, we are open to anybody giving us any recommendations, any suggestions. So there is a website of the Commission where any citizen of India can send an email making certain recommendations. Okay. So today, as a part of that consultation process, we had a long meeting in the morning with the Chief Minister of Odisha and his government. As a part of that, we had some remarks made by the Chief Secretary, some remarks, a speech delivered by the Chief Minister. We also then had a long presentation by the Principal Secretary of Finance, who is present here. This was a very impressive, very long presentation, bringing together both the economic development of the state of Odisha, but more importantly, focusing specifically on the finances of Odisha. Both the speech of the Chief Minister as well as the remarks, as well as the presentation by the Principal Secretary of Finance laid out what the state's expectations from this commission are. Right? And in particular, I will describe the recommendations that they made to the 16th Finance Commission as to what recommendations should the 16th Finance Commission make to the President of India regarding the vertical and horizontal devolution. So on vertical devolution, the state's recommendation is that the cesses and surcharges, to which I alluded before, that cesses and surcharges currently levied by the central government go directly 100% to the budget of the central government. These cesses and surcharges are constitutionally not allowed to be shared with the states. So they are not part of the divisible pool. So state's plea was that these cesses and surcharges should be brought into the divisible pool so that the states can also benefit from the revenues that are collected as cesses and surcharges. That was one on vertical devolution. Second recommendation of the state was that the share of the states out of the divisible pool should be increased from 41% under 15th Finance Commission to 50% under the 16th Finance Commission. By the way, the award period of the 16th Finance Commission will be 2026-27 to 2030-31. Generally, each commission makes the recommendations for 5-year period. And then there is another Finance Commission appointed in the meantime, which then would make recommendations for years starting from 2031-32. The 15th, actually, because of COVID, had covered 6 instead of 5 years. So it gave 2 reports. One was for 1 year, the first year, and then the second report was for the 5 years, which will be ending in the year 2025-26. So our mandate will end on at the end of October of this year, 2025, so that we are supposed to make our recommendations to the President of India by that date. So that remember that in the end, whatever recommendations we make
will contribute then to the budget of 2026-27. So both central government and the state governments have to be doing their budgets for the next year, 26-27. And so effectively we are very much bound by that requirement, and so must give our report to the President before the end of October 2025. So that was vertical devolution. On horizontal devolution, states made some recommendations also. So what I will do is to give you will give you a comparison of what the state has recommended with what the current practice is under the 15th Finance Commission. All right. So what happens is that this horizontal devolution, which is the division of the state's share in the divisible pool among the 28 states, is done on the basis of certain criteria. For example, under the 15th Commission, 15% of the divisible pool is distributed according to each state's share in the total population of India. So if a state has 5% share in the population of India, then 15% of the divisible pool is given to it on that basis, meaning 5% of the 15% of the divisible pool is then given to that state, and similarly for the other states. Similarly, area is another criterion that is commonly used. So once again, if a state has 3% share in the total share in the total area of India, then say under 15 that was 15%, 15% of, so 3% of the 15% goes to that state. Okay, so this is how it is done. So on population, 15th Finance Commission had said 15% weight should be given to population. The recommendation of Odisha on this is a slightly different one. What it said was that weight can be kept at 15%, but we should think of population a little differently. We should look at the share of vulnerable population, meaning SC, ST and old age. Old age defined as anybody who is 80 and older. That what is the share of, let's say, Odisha in India's total population of SC plus ST plus old age. So they are recommending, this is a very new thing that the state has recommended, that rather than use the entire population as the criterion, use the population of the vulnerable sections of the society. Okay. On area, again, the weight was reduced by, or the recommendation of Odisha is that instead of 15, only 5% weight should be given to population, and only 5% weight should be given anything related to area, and actually they defined the replace really area by the density of population. That instead of area, use density of population as the criterion and reduce the weight to 5%. Then forest and ecology, that had a weight of 10% in the 15th Finance Commission. The recommendation of Odisha is to replace forest and ecology by only forest cover, and the weight be kept at 10%, which is the same as in the 15th Finance Commission. Now, one very important criterion that several of the recent finance commissions have used for devolution, horizontal devolution, is called the income distance criterion. The weight was 45% under 15th, and Odisha's recommendation is also to keep it at 45%. Now, income distance, effectively what it tries to do is the lower the per capita income of a state relative to the state with the highest per capita income, the more the share of that state in the divisible pool. So this particular criterion is used to do
some sort of what is called the equalization. The philosophy being that every state should be able to provide at least a minimum level of public services to its citizens. And sometimes if a state is very poor, then its own revenue resources are very meager, and therefore it should be awarded a bit more to compensate for the gap that might exist, for the fact that using purely its own resources, it may not be able to provide that minimum level of the public services. So that weight is generally very high, and it's 45 both under the 15th Finance Commission and under the recommendations that Odisha government has made. Then a fifth criterion that the 15th Finance Commission had used was tax and fiscal effort by the state. This is a measure of how much revenue is the state raising on its own. So 15th had given 2.5% weight to that, but excuse me, the state of Odisha has said that instead of that, we should use a criterion called fiscal discipline. More disciplined is a state, more fiscally responsible is a state, higher the weight, the higher the devolution to it, and it recommends that as much as 15% of the divisible pool should be given on the basis of this fiscal discipline. And finally, last is a demographic performance variable, which is 15th Finance Commission used the total fertility rate, opposite, 1 divided by the total fertility rate as the criterion, and gave 12.5% weight to that criterion. And the Odisha government wants to keep that, but reduce the weight of that to 10%. So if you look at all the weights, 15% for modified population, 5% for population density, forest cover 10%, per capita income distance 45%, fiscal discipline 15%, demographic performance 10%. That will add up to 100. Then there was some discussion on issues of local body grants and disaster relief grants. That was more or less the broad discussion on the finances. We also, in general, discussed the very good performance that Odisha economy has exhibited over the last couple of decades, and the transformation that has gone through. We discussed a little bit about what more could Odisha do. Particularly, one particular subject of discussion was urbanization, in which Odisha has been behind the rest of the country, and how Odisha could, accelerate its rate of urbanization. ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ଦୁର୍ଗମ ଅପନ୍ତରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଶୁଣେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସତମିଛର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। ମୋର ଲୁହ ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପି ରଖେ। ଦେଶର ଅମୃତ କାଳରେ ଏଠି ବିଷ ଆଉ ବିଷାଦର କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବତାର ନିଛକ ସତକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଜନ ଅଡିଟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं। जय जगन्नाथ। चकाखी सबू देख आमे लड़ू साधारण ओडिया न्यायर लड़ी। किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहबू रोक ठोक। सांस्कृतिक राजधानी राज्य राजधानी
कटक भुवनेश्वर प्रथम आपको दृश्य देखा चाहिए क्राइम पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स बिजनेस जीवन जीविका और संघर्षर आखि देखा कहानी ट्विन सिटी बड़ खबर प्रतिदिन संध्या 5:30 केवल अर्गस न्यूज रे। आमर प्रतिटी सकाळर आरंभ किछि चिन्हा चिन्हा व्यक्तित्व सहित स्वागत जहां संघर्ष पुणी सफलतार कथा सबू आपण को करिब प्रभावित आपण कहिबे यही तो प्रेरणा इंजीनियरिंग आमर प्रतिटी अतिथि आपण सकाळर प्रथम अतिथि अतिथि देव भव आम संस्कृति आम विचारधारा आज अतिथि सोमवार गुरुवार सकाळ 8:30 चलो देवमाली चलो राज्य आमर भोट आमर सरकार on the devolution of the functions, while the commission is very sympathetic to more and more devolution, and that is the spirit of the both 73rd and 74th amendments. In the end, the decision really lies with the states. So again, the commission itself doesn't have the powers to change, powers to force any devolution of the functions to the states. We encourage them. We certainly encourage them. Sir, I am organizer of Asian Region Deccan Chronicle. Sir, this sir. Yes, sir. I am organizer from Asian Region Deccan Chronicle. Apart from Odisha, Gujarat had earlier also demanded 50% share in central taxes. So, what is the observation first? How does the commission see it? Number two, as regards the Wait, sorry. What is your first part of it? My first question is that apart from Odisha, previously Gujarat government has also demanded 50% share in central taxes. So how does the commission see number one, number two, as regards this horizontal devolution of taxes, as you mentioned that Odisha has demanded आम विकास भी हेबो आम कथारे चोरी चपाटी पिसीर आमे करिबु विरोध आपण करिबे निष्पत्ति महापंचायत रविवार राति 8टारे। छोट बड़